NTSE एग्ज़ाम का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ बेसिक्स देखे। आज हम सेकंड सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, जितना हमने पहले सेशन में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, नोट्स को प्रॉपरली लिखिए, पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने कल देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट it is equals to minus b divided by a. According to this equation, what is minus b? So minus b is nothing but minus root 5. So minus b, that is alpha plus beta, is equals to minus b is nothing but minus under root 5 divided by a is nothing but 3. Okay, the given four options were, these were the four options. ये थे हमारे four options. A is nothing but root 5 by 3, B is nothing but 2 by 3, C is nothing but minus root by 3 minus root 5 by 3, and D is minus 3 by root 5. So we can say the answer is my option number C, that is minus root 5 by 3. Take the screenshot of this question and write it in your notebook. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फोर ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है इसके आने वाले रूट्स में से एक रूट है. सो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द मेथड दैट वी लर्न बिफोर. 5 इंटू 9 हम करते हैं, a इंटू सी करते हैं. जब हम a इंटू सी करेंगे इट मीन्स कि हम 5 इंटू माइनस 9 करेंगे, वी विल गेट माइनस 45. अब माइनस 45 के हमें दो रूट्स देखने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या मिले, हमें माइनस 12 मिले. ओके, सो वी कैन से 15 3 ज़ा 45. अब माइनस 12 हमें इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस विथ बिगर टर्म, माइनस 15 प्लस 3. सो this quadratic equation can be written as minus 15x plus 3x minus 9 is equals to 0. 5x, we can take 5x as common here, then in bracket it remains x minus 3, means 5 3s are 15 will be there. Okay, now plus 3 as common, then x minus 3 repeated. Now we can see one bracket is x minus 3, that is equals to 0, or 5x plus 3 is equals to 0. So one root we get x is equals to 3. This root is not in our options. We can see हमें यहाँ ऑप्शंस में ये रूट नहीं दिया गया है. इट मीन्स कि सेकेंड वाला जो रूट होगा वो ऑप्शंस में डेफिनेटली होगा. x इज इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 उधर जाकर, और दिस 5 विल गो इन डिनोमिनेटर, सो इट विल बिकम माइनस 3 बाई 5, विच इज़ ऑप्शन नंबर C. ओके, C is our answer. Okay, the next question is, which of the following quadratic equations have real and distinct roots? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब d की वैल्यू जो होगी हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट टाइम वी कैन से द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज a, we can see b square minus 4ac is nothing but b square is minus 3 square, minus 4 into a is 1, c is 9. Okay, so we can say 3 minus 3 square is 9, 9 minus 4 9s are 36, so 4 9s are 36, which is equals to minus 27.
हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये माइनस में आई है. सो वी कैन से दीज आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल्स, दीज आर इमेजिनरी रूल्स, बिकॉज इन इमेजिनरी रूल्स क्या होता है कि वो 0 से छोटी होती है वैल्यू, डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा ऑप्शन नंबर बी के लिए, माइनस 4 स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is 4. So minus 4 square means 16 minus 16 minus 16, 16 minus 16 होते हैं 0. तो हम ये कह सकते हैं कि these are not real and distinct rules. जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, that time we say that roots of the equation are real and equal. जब 0 होती है तो हम क्या कहते हैं, रियल और इक्वल कहते हैं. बट हमें जब रियल और डिस्टिंक्ट पूछा गया है तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी. अब थर्ड क्वेश्चन के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज देयर. ओके, सो बी के लिए हम लेंगे 2, ए के लिए लेंगे 1 और सी के लिए लेंगे 3. So b square minus 4ac will be equals to 2 square minus 4 into 1 into 3. 2 square is 4 minus 12 is there. So it becomes minus 8. Again we get imaginary rules. Now fourth option, for fourth option, it must be an answer or answer. See, fourth option says 1, a is 1, b is 5 and c is 1. Okay. So 5 square minus 4 into 1, 4 into 1 AC into 1. 5 square is 25 minus 4, that is equals to 21. So we got the fourth option answer is 21, that is discriminant is equals to 21. Thus roots are equal and distinct for option number D. ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा. ओके ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा विल बी. So first of all we will see what about the values of alpha plus beta and alpha into beta. Okay, after that we will search the value of 1 by alpha plus 1 by beta. So first the alpha plus beta is nothing but minus b by a. Minus b here is nothing but 2 minus 2 divided by 1. It means it is only minus 2. Now what about alpha into beta? Alpha into beta is nothing but c divided by a. C here is minus 3 divided by a means 1. Okay, so now we can find the value of alpha divided by 1 by alpha plus 1 by beta, which is equals to, if we multiply it क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इज नथिंग बट इट इज़ माइनस 2 and alpha into beta is nothing but minus 3. So minus minus will get cancelled, 2 by 3 will be the answer. 2 by 3 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी. ओके, you can take the screenshot of this question and write it in your notebook as well. See, the next question is, if the roots of the quadratic equation are real and unequal, which of the following is true for k? What is about real and unequal root? First of all, we need to understand this. The solution of this question will be like this. Solution of this question will be like this. The d will be greater than 0, that is discriminant, whatever will be the discriminant, it will be greater than 0. It will be greater than 0. So b is nothing but here is 3.
3 square minus 4 into A is k and C is 2. 3 square is 9 minus 4 to the 8 k. It will be greater than 0. So if we bring this minus 8k to the right hand side, it will become 9 greater than 8k. So in this way we can say 9 divided by 8 is greater than k, which is option number B. B is the correct answer, that is k is less than 9 by 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव 3 and 4 एज द रूट्स. 4 इक्वेशंस दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके इन चारों इक्वेशंस में से 3 and 4 किस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें ये फाइंड करना है. तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में मेथड बताया था, उसमें होता यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0. इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनती है. ओके, सो वी कैन से दैट द गिवन रूट्स आर 3 and 4 आर ऑफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, देन वी कैन राइट to this x square minus alpha plus beta. We are considering 3 and 4 as alpha plus beta. तो हम कह सकते हैं कि 3 plus 4x plus 3 into 4. 3 into 4 is nothing but 12 is equals to 0. So x is equals x square minus 7x plus 12 is equals to 0. जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 and 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड दीज रूट्स आर ऑफ विच इक्वेशन, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस. आपको इस मेथड से आपको करना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है. फॉर्मेशन ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर 3, that is C. Okay, take the screenshot and write it in your notebook as well. The next question is the product of two integers is 20 if one number is 8 less than the other. The smallest number is, एक नंबर यहाँ पर दिया गया है जो दूसरे नंबर से 8 कम है. ओके, so we consider that a number is x and another number is x minus 8. यही क्वेश्चन में कहा गया इफ़ वन नंबर इज़ 8 लेस दैन द अदर, सो वी कंसिडर x ए नंबर एंड अदर नंबर एज x माइनस 8. ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 20. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 20 है. सो द इक्वेशन कम्स आउट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसके रूट्स निकालेंगे. सो देन वी गेट हियर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन हमारा 20 हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा 8 हो. ओके, सो इन दिस वे वी गेट माइनस 10x प्लस 2x. माइनस 10 में से 2 जाएंगे तो माइनस 8 रहेंगे और 10 इंटू 2 विल बिकम माइनस 20. Then minus 20 is equals to 0. So first x minus 10 and the second one is plus 2x minus 10 is equals to 0. So x minus 10 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. X is equals to 10 and x is equals to minus 2. The smaller number is nothing but, the smaller number is if one number is 8 less than the other number. Okay, so we can say the smaller number will be like 10 minus 8, 8 less than, so it will be 2. It will be 2. So 2 will be one number and other number is 10.
other number is 10. If one number is 8 less than the other, so we get one number 10, other number will be 8 less than 10, so it will be 8 less than 10 means it will be 2. So we had to find here the smallest number. हमें यहाँ पर smallest number search करना था, that we got here as 2. Okay, so the option number C will be the correct answer. Okay, next question है, if the sum and the product of the roots of a quadratic equation is -14 and -32, कि हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोसेस है, हमने जो सीखा फर्स्ट सेशन में और आज भी एक क्वेश्चन हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये प्रोसेस है हमारा, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कि सम कहते हैं एडिशन को, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को. सम इज़ -14, सो वी कैन राइट इट इन ब्रैकेट -14 x plus alpha into beta will be like -32, that is equals to 0. So the entire equation will become plus 14x minus 32 is equals to 0. Okay, हम अब स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, स्प्लिट करेंगे कुछ इस तरह से कि a इंटू सी जो हो हमारा, that will equal to the middle term. So -32 के हम दो रूट्स इस तरह के देखेंगे, -32 के कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें मिले 14. सो वन रूट विल बी 16, अनदर रूट विल बी -2. एक्स स्क्वायर प्लस 16x minus 2x minus 32 is equals to 0. Okay, so in this way what happens, we get x plus 16 minus 2 common, x plus 16 is equals to 0. So x plus 16 and x minus 2 is equals to 0. So जब x के वैल्यू जब हम x इक्वल्स टू कर देंगे तो -16 हो जाएगा, और ये -2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स के राइट हैंड साइड में जाकर +2 हो जाएगा. सो द आंसर विल बी लाइक -16 +2, which is option number -16 and +2 is option number B. Okay, इस तरह का क्वेश्चन आपको NTSE एग्ज़ाम में आ सकता है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एट योर ओन. अपने आप कोशिश कीजिए करने की बगैर देखे, 2-4 बार समझिए अच्छे से, फिर जब आप इसे ना देखते हुए अच्छे से कर सकते हैं, देन यू कैन गेन दी कॉन्फिडेंस एज वेल. Okay, the next question is, the sum of the squares of two consecutive positive integers is 365. The smaller of the two numbers is, हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो दो नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है अगर एक नंबर x है तो दूसरा जो नंबर है वो x + 1 है. ओके, तो कहा यह जा रहा है कि द सम ऑफ, इन दोनों का सम, ठीक है, x का सम x + 1 के साथ, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, और इनका स्क्वायर्स कितना होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365. सो द आंसर इज 365. अब इससे बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जो पता करना है हमको वो है कि द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, इसके अंदर से जो स्मॉलर वाला नंबर है विच इज़ x1. ओके, एक्स स्क्वायर. सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम ये होता है अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x means 2x + 1 and 365 is there, it comes to left hand side, it will becomes 0. Okay, now 2x square, x square plus x square is 2x square plus 2x
minus 364 is equals to 0. Okay, we can divide the entire equation by 2 because we can see 2 everywhere, 2 here, 2 here, and we can divide this number with 2 as well. ये number 2 से divide होता है. That's why we divide this equation by 2. It will become x square plus x minus 2 ones are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4 is equals to 0. Okay, so this is the new equation. अब हमें 182 के दो रूट्स चाहिए जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो, 1 हो, प्लस 1 हो. सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस 1 रहेगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0. एंड 14 में से 13 जाएंगे तो 1 रहेगा, और 14 इंटू 13 करेंगे तो क्या होगा, आंसर मिलेगा माइनस 182. So in this way we get one root as x plus 14 and the second is x minus 13 is equals to 0. It means कि x is equals to minus 14 or x is equals to 13. So x is equals to 13. The integer are positive. They are 13 and 14. Hence the smaller number is 13. स्मॉलर नंबर क्या मिला हमको, स्मॉलर नंबर मिला 13. ऑप्शन है यहाँ पर 13, ऑप्शन नंबर बी. जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव कहे जा रहे हैं, इसलिए हम माइनस कंसिडर नहीं करेंगे. ये जो माइनस 14 आया हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13. You can take the screenshot of this question and write it in your notebook as well. ये थे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस थे ये जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एनटीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं. सो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और सारे क्वेश्चंस आप बगैर देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. अगर ये सवालात, ये क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आने के बाद उन्हें आप easily attempt कर सकते हैं because you have done a lot of practice of such type of questions. Okay, so here we complete our today's session. I hope you are studying well. Keep it up and best of luck.